Roll number MCS 20011. Topic is financial reporting quality and board independence. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पेपर इज effects of board size, board composition and dividend policy on real earnings management. तो effect of board size, board composition and dividend policy. हमारा topic था financial reporting quality and board independence. So we have to see the abstract whether there is board independence in it or not. In which thereby turning black eyes to its negative impact on generally conversations aimed at examining the impact of board size, board composition, dividend policy, and real earning in the listed Jordan firms. Positive and significant between board size, board and real earning management. This study has immediately contributed towards bridging the gap in knowledge and documenting finding the findings. The benefit of these findings cross over the manager, shareholder, board of directors, investor, journal, government on build up healthy investor. अच्छा, ये आपको इधर थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। इस टाइटल के अंदर भी और इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी बोर्ड इंडिपेंडेंस जो है उसको किसी जगह पे डिस्कस नहीं किया गया। सो जो चीज़ें बोर्ड से रेलिवेंट डिस्कस हुई हैं, दोज आर बोर्ड साइज, बोर्ड कंपोजिशन एंड डिविडेंड पॉलिसी. So our second variable is not present into this paper. That is why you cannot include this paper. It is irrelevant. Board of Directors on Financial Reporting Quality in Vietnamese companies. So topic was financial reporting quality and board independence. So we have to see whether board independence is present in it or not. The researchers have found that board of directors size independence. Okay, you can include this paper. The impact of board gender diversity on financial reporting practices in Kazakhstan. Board gender diversity. Uh, I have to see that whether board independence is present in it or not. Aim to review the latest management developments across the globe and pinpoint practical implications from cutting edge research and case studies methodologies. Independent writers who add their own empirical comments and place their article in context. The research paper on how the presence of women and board of directors listed companies in Canada may impact the quality and trust of financial reporting. Based on this analysis, women were found to be another information failures within these arguments. Further, board diversity was found to be particularly strong deterrent to earnings management in high industry within emerging markets. The result also convey the earning management practices are less common in firms that have high number of directors and in profitable companies. Okay, this paper is irrelevant because again आपको अपना टॉपिक जो है उसे बार बार देखते रहना चाहिए. Your topic is financial reporting quality and board independence. So board independence is not present into this paper as well. The effect of earning minimum shareholder value and the role of board gender diversity. This study aims to investigate whether shareholders are convinced by earnings management. This will also explore how board gender diversity may influence the extent to which shareholders are convinced with earnings management. Again, ये पेपर भी irrelevant है. ठीक है. You cannot include paper number 4. Intellectual capital mediator of board of directors effectiveness and adoption of international financial reporting. Whether intellectual capital mediation, the relationship between board of directors effectiveness and international financial reporting standard, and to examine the conclusion of specific element of unable to question or receive from 67 microfinance data member of a the data was analyzed using statistical packages of social sciences and medical program. Finding results indicate that intellectual capital mediates the board of directors effectiveness and adoption of IFRS. Okay. Board independence and board meeting contribute significantly to adoption of IFRS. Okay. You can include this paper relation between online corporate governance and transparency disclosure on board composition. Corporate governance and transparency disclosure. ठीक हो गया. अब इधर हमने ये देखना है कि इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें अवेलेबल है कि नहीं. बोर्ड इंडिपेंडेंस
अच्छा, इसका एक आसान हल जो है वो ये भी होता है कि सर्च विद इन रिजल्ट में आप बोर्ड इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंसी board of the financial reporting quality, negative quality, effective reduction of international financial reporting quality, uh, online corporate governance transfer and disclosure and board composition evidence from the board independence. ओके, तो हम अगर इसको ऐसे सर्च विद इन रिजल्ट्स कर दें तो आप जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करोगे उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी ये आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, जैसे कि ये है। ओके, सो इट वुड बी इजियर फॉर यू इन दिस केस। अच्छा, 10 बोर्ड ऑफ इंडियन कंस्ट्रेंट के हम पांचवे पे थे, इंटेलेक्चुअल कैपिटल में। ठीक है, मेडिएटिंग रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑप्शन ठीक हो गया, ये ओके है। बोर्ड जेंडर डाइवर्सिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड इंडिपेंडेंस, ओके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अर्निंग्स मैनेजमेंट, सो अर्निंग मैनेजमेंट इधर आइडेंटिफाई हो गया, बोर्ड इंडिपेंडेंस इधर आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, द इफेक्टिवनेस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात हो रही है, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेक्टरिस्टिक्स अर्निंग क्वालिटी, सो बोर्ड इंडिपेंडेंस एंड अर्निंग क्वालिटी प्रेजेंट ओवर हियर। उसके बाद आ गया जी बोर्ड इंडिपेंडेंस एंड the reciprocal relation between earnings management, ठीक है। earnings management represent reporting quality, thus board gender diversity affected transparency. So I think this paper is not relevant because gender diversity की बात हो रही है, independence की बात नहीं हो रही। और दूसरी तरफ corporate political disclosures की बात हो रही है, transparency of corporate, this paper cannot be included. The role of board of directors in transparency and integrity in state-owned enterprises, तो इसमें बोर्ड इंडिपेंडेंस है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी जो है उसे देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ सेवरल कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ एक्टिव assess the empirical for 60 Italian listed non-listed state-owned enterprises. Each enterprise website was individually examined and coded to obtain two self-confirmation on transparency and integrity, and a regression model was created to test the hypothesis. नहीं, ये नहीं है। बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी इफेक्टिवनेस, एथनिक डाइवर्सिफिकेशन, बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी इन मलेशिया, बोर्ड इंडिपेंडेंस इधर नहीं है, एथनिक डाइवर्सिटी एंड अर्निंग्स मैनेजमेंट। सो बोर्ड इंडिपेंडेंस जो है वो इधर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कैन नॉट इंक्लूड दिस पेपर। बोर्ड इंडिपेंडेंस ऑडिट क्वालिटी एंड मैनेजमेंट पेपर इज रेलेवेंट, 13 included. Has the board been effective enough to look after the earnings manipulation? Has the board been effective enough? So board independence and दूसरी तरफ अर्निंग मैनिपुलेशन की बात हो रही है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट क्वालिटी, बोर्ड इंडिपेंडेंस एंड ऑडिट कमेटी independence on earnings management. This paper is also relevant. And then board of directors financial transparency and disclosure evidence from Italy. So board of directors जो है उनकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेशो, ओके। एंड दूसरी तरफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, सो दिस पेपर इज आल्सो रेलेवेंट। दी इफेक्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड अर्निंग क्वालिटी, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद अर्निंग्स क्वालिटी एंड बोर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आ गया अर्निंग क्वालिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी ऑफ जर्मन सुपरवाइजरी बोर्ड। आई थिंक बोर्ड इंडिपेंडेंस जो है उसमें थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम नजर आ रहा है।
जेंडर डाइवर्सिटी की बात हो रही है. Since last 20% of seats on corporate boards in Germany are held by women, the German parliament passed a law recently to require listed companies with employee representing on their supervisory boards to give 30% of the seats to the women beginning in 2007. Based on the findings in prior research on gender-based differences in a variety of decision settings and expansion of skills, experience, and perspective by gender diversity, the author emphasized that from the gender diversified boards will have higher quality of financial reporting. नो बोर्ड इंडिपेंडेंस जो है वो यानी इसमें जेंडर डाइवर्सिटी की बात हो रही है. सो यू कैन इंक्लूड पेपर नंबर 19 द इफेक्ट ऑफ बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन रियल अर्निंग्स मैनेजमेंट. बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम एब्स्ट्रैक्ट देखें तो इंडिपेंडेंस की बात नहीं हो रही नहीं है बाय इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स एंड नॉन इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स. एंड दूसरी तरफ द इफेक्ट ऑफ बोर्ड और एंड ऑडिट कमेटी ऑन रियल अर्निंग मैनेजमेंट. ठीक है. सो दिस पेपर कैन आल्सो बी इंक्लूडेड. ठीक है. अच्छा, अब आपके इस लिस्ट में मसला ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स थे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी ऑन बोर्ड इनवर्ट वो 313 है. you have to include you have to increase the list, increase number of more relevant documents into your list. And टोटल कितने हैं? 313. and those must be around 250 papers.